India has once again taken center stage on the global platform, this time at the 17th BRICS summit held in Brazil. With terrorism and global governance reforms high on the agenda, Prime Minister Narendra Modi's address not only highlighted India's unwavering stand against terror, but also exposed the double standards of countries that continue to shield terrorists for geopolitical interests. Our report. At the 17th BRICS summit in Brazil's Rio de Janeiro, India succeeded in securing a united front among member countries against terrorism. The Pahalgam attack in Jammu and Kashmir, which claimed 26 lives earlier this year, was unanimously condemned in the strongest terms. The summit's Rio Declaration firmly rejected the use of terror as a tool of state policy and called for action against those who fund, support, or shelter terrorists. On the session on peace and security, Honorable Prime Minister underlined that terrorism was a grave threat facing humanity. In this context, he noted that all the leaders have condemned Pahalgam terrorist attack in strongest terms. He underlined that the Pahalgam attack, terror attack, is an onslaught on the entire humanity. He also noted that those funding, promoting and providing safe havens to terrorists must be dealt with in the harshest terms. Although the joint statement did not explicitly name Pakistan, the language left little ambiguity. It included references to cross-border terrorism and urged the international community to act against those who covertly or overtly abet such crimes. India's persistent diplomacy ensured that BRICS went beyond token condemnations this time. ब्रिक्स के राष्ट्रों के द्वारा जो ब्राजील में हुए शिखर सम्मेलन के बाद साझा बयान जारी किया गया है, उसमें ब्रिक्स के राष्ट्रों ने भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। हालांकि इस पूरे घोषणा पत्र में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, लेकिन इस बात बहुत स्पष्ट है कि ब्रिक्स के जो राष्ट्र हैं वो आतंकवाद के संदर्भ में अपने कड़े रुख को उन्होंने व्यक्त किया है, जो कि आज के समय की आवश्यकता है। भारत लगातार आतंकवाद के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस बात की अपील कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आतंकवाद के संदर्भ में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए और सख्त रुख अपनाए। और ये बेहद हर्ष का विषय है कि ब्रिक्स के राष्ट्रों के द्वारा भी पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा व्यक्त की गई है और इस पूरे आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला करने के लिए ब्रिक्स के राष्ट्रों ने अपनी संकल्पबद्धता, अपनी एकजुटता को दर्शाया है। Prime Minister Narendra Modi's speech at the summit resonated across international corridors. He reiterated that terrorism is not a national issue for India, but a global threat. He emphasized the need for zero tolerance and zero double standards, an unmistakable critique of those countries that continue to selectively fight terrorism. तो रियलिटी ये है कि आतंक के मुद्दे को लेकर के कोई देश जितनी सीरियसनेस, परसिस्टेंस के साथ बात कर रहा है वो भारत है, कोई और देश नहीं कर रहा। इतनी सिंसेरिटी, इतनी परसिवियरेंस से। हाँ, आतंक से सब पीड़ित हैं, अमेरिका भी पीड़ित है, यूरोप भी है, सब हैं, परंतु अपने अपने देशों के अंदर ये अलग एंगल से फंसे हुए हैं। सब आतंक की बात करते हैं, लिप सर्विस करते हैं, और जब खुद आता है तो फिर उससे एंगेज करने में परेशानी होती है इन देशों को। India's message found further reinforcement during bilateral meetings with countries like Brazil, Malaysia, Cuba, and Vietnam. 3 agreements were signed, including one specifically on countering international terrorism. India also called for UN Security Council reforms, IMF and World Bank restructuring, and the creation
of a multipolar and inclusive global order, themes that dominated the summit's agenda. India also proposed the establishment of a BRICS Science and Research Repository and stressed securing critical mineral supply chains and advancing responsible artificial intelligence. These forward-looking initiatives reflect India's growing stature not just as a security partner but also as a development and innovation leader. Despite China's presence and participation, New Delhi's diplomatic maneuvering managed to bring terrorism front and center. Beijing's history of blocking UN listings of Pakistan-based terrorists came under subtle but sharp scrutiny. India's firm pushback against such duplicity left a strong imprint on the summit outcome, even if not named explicitly.